ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 52 of KishkindhaKandam, which has 32 verses. Narrating the whole story from the entry of Sri Rama into the forest round about the Pampa lake, down to the entry of the monkeys into the cave, and complimenting Swayamprabha on the hospitality shown by her and wishing to repay her hospitality, Hanuman inquires of her if he can be of any service to her. Swayamprabha, however, declines his offer, saying that being engaged in the practice of virtue, she has no purpose to achieve through another. आज हम किष्किंधा कांड के 50 सर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 32 श्लोक हैं। तापसी स्वयंप्रभा के पूछने पर वानरों का उसे अपना वृत्तांत बताना और उसके प्रभाव से गुफा के बाहर निकलकर समुद्र तट पर पहुंचाना। अथ तान् अब्रवीत् सर्वान् विश्रान्तान् हरियूतपान् इदं वचनम् एकाग्रा तापसी धर्मचारिणी। तत्पश्चात जब सब वानर युत्पत्ति खा पीकर विश्राम कर चुके, तब धर्म का आचरण करने वाली व एक ग्रह दिया तपस्विनी उन सब से इस प्रकार बोली। To all those leaders of monkey bands, when they had rested a while after accepting her hospitality, the ascetic woman who was engaged in practicing virtue and had focused her attention on that one object, now spoke the following words. वानरा यदि वह खेदः प्रनष्टः फलभक्षणात् यदि चैतन्मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि तां कथाम्। वानरों, यदि फल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो और यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ। If for monkeys your fatigue has been fully relieved by partaking of the fruits offered by me, and if your story admits of being listened to by me, I long to hear that story. तस्याः तत् वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः आर्जवेन यथा तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। उसकी यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान जी बड़ी सरलता के साथ यथार्थ बात कहने लगे। Hearing the aforesaid request of Swayamprabha, Hanuman, son of the wind god, proceeded with perfect candor to narrate his story correctly. राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्र वरुणोत्तमः रामो दाशरथी श्रीमान् प्रविष्टो दंडकावनम्। देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं, दंडकारण्य में पधारे थे। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया तस्य भार्या जनस्थानात् रावणेन कृता बलात्। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेही नंदिनी सीता भी थी। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। The glorious son of Dasharatha, Sri Rama, the sovereign of the whole world and the comparer of the mighty Indra, the ruler of the gods, and Varuna, the god of water, entered the Dandaka forest along with his younger brother Lakshmana, as well as his spouse Sita, the princess of the Videhi territory. His consort was forcibly carried away from Janasthana by Ravana while she was all alone in the cottage. वीरः तस्य सखा राज्ञः सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम् अगस्त्य चरितामाशां दक्षिणां यमरक्षितां सहैभिः वानरैः मुख्यैः अंगद प्रमुखैर्वयम्। श्रेष्ठ वानरों के राजा वानर जातीय वीर वर सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं।
इन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को सीता की खोज करने के लिए अगस्त सेवित और यमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। A friend of the aforesaid sovereign is a valiant monkey, Sugriva by name, the ruler of the foremost of monkeys, by whom we have been dispatched, along with these leading monkeys, headed by Angada, to the southern quarters inhabited by sage Agastya and protected by Yama, the god of retribution. रावणं सहिताः सर्वे राक्षसं कामरूपिणं सीतया सह वैदेह्या मार्गत्वम् इति चोदिताः। उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विदेही कुमारी सीता सहित उस इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाना। And we have been commanded as follows. Look out, all of you together, for that ogre Ravana, who is capable of changing his form at will, along with Sita, the princess of the Videhi territory. विचित्य तु वनं सर्वं समुद्रं दक्षिणां दिशं वयं बुभुक्षिताः सर्वे वृक्षमूल उपाश्रिताः। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। अब तक सीता का कुछ पता नहीं लगा और हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हो गए। अंत में हम सब के सब एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। Having scoured the entire forest in this area and eager to explore the ocean and the rest of the southern quarter, we for our part all took shelter at the foot of a tree, hungry as we were. विवर्णवदनाः सर्वे सर्वे ध्यानपरायणाः न अधिगच्छामहे पारं मग्नाश्चिन्तां चिन्ता महार्णवे। हमारे मुख की कांति फीकी पड़ गई। हम सभी चिंता में मग्न हो गए। चिंता के महासागर में डूबकर हम उसका पार नहीं पा रहे थे। All pale-faced and all absorbed in thought, we were sunk in an ocean of anxiety, whose end we did not perceive, O lady. चारयन्तः ततः चक्षुर्दृष्टवन्तो महद्बिलं लता पादपसञ्चन्नं तिमिरेण समावृतम्। इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको ये विशाल गुफा दिखाई पड़ी, जो लता और वृक्षों से ढकी हुई तथा अंधकार से आच्छन्न थी। Casting our eyes all around, we then beheld this extensive cave hidden by climbers and trees and totally enveloped in gloom. अस्माद् हंसा जलक्लिन्नाः पक्षैः सलिलरेणुभिः कुरराः सारसाश्चैव निष्पतन्ति पतत्रिणः। थोड़ी ही देर में इस गुफा से हंस, कुरर और सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जल से भीगे थे और उनमें कीचड़ लगी हुई थी। From this cave, however, flew out birds that are the swans, the ospreys, and cranes too, wet with water, their wings dusted with the pollen of lotuses. साध्वत्र प्रविशामेति मया तुक्ताः प्लवंगमाः तेषामपि हि सर्वेषाम् अनुमानम् उपागतम्। तब मैंने वानरों से कहा, अच्छा होगा कि हम लोग इसके भीतर हैं। इन सब वानरों को भी ये अनुमान हो गया था कि गुफा के भीतर पानी है। We had better penetrate deep into it. So were the monkeys told by me. The idea that water existed inside the cave equally struck all of them as well. अस्मिन् निपतिताः सर्वे अपि अथ कार्यत्वरान्विताः ततो गाढं निपतिता गृह्य हस्तैः परस्परम्। हम सब लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे ही, अतः इस गुफा में कूद पड़े। अपने हाथों से एक दूसरे को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर हम गुफा में आगे बढ़ने लगे। Full of hurry to accomplish our purpose, we forthwith ventured into this cave, one and all. Catching hold of one another by the hand, we then penetrated deep into it. इदं प्रविष्टाः सहसा बिलं तिमिर संवृतम्
एतत् नः कार्यम् एतेन कृत्येन वयम् आगताः। इस तरह सहसा हम लोगों ने इस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम इधर आए हैं। In this way, we precipitatedly forced our way into this cave enveloped in darkness. This is our purpose, and with this motive, we have come to this place. त्वां चैवोपगताः सर्वे परिद्यूना बुभुक्षिताः अतिथ्य धर्मात् तानि मूलानि च फलानि च। भूख से व्याकुल एवं दुर्बल होने के कारण हम सब ने तुम्हारी शरण ली। तुमने आतिथ्य धर्म के अनुसार हमें फल और मूल अर्पित किए और हमने भी भूख से पीड़ित होने के कारण उन्हें भरपेट खाया। Nay, famished and wasted away, we have all approached you, sorely tired as we were from hunger, the roots and fruits too, so kindly offered by you out of consideration of hospitality, have been partaken of by us. अस्माभिः उपयुक्तानि बुभुक्षा परिपीडितैः यत् त्वया रक्षिताः सर्वे म्रियमाणा बुभुक्षया। देवी, हम भूख से मर रहे थे, तुमने हम सब लोगों के प्राण बचा लिए। अतः बताओ, ये वानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें? Since we have all been saved by you, dying as we were of starvation, pray, speak out. What can the monkeys do for you in return for your invaluable service? ब्रूहि प्रति उपकारार्थं किं ते कुर्वन्तु वानराः। एवं मुक्ता तु सर्वज्ञा वानरैः तैः स्वयंप्रभा। स्वयंप्रभा सर्वज्ञ थी। उन वानरों के ऐसा कहने पर उसने उन सभी युद्धपतियों को इस प्रकार उत्तर दिया। Spoken to in these words by those monkeys, the all-knowing Swayamprabha for her part thereupon replied to all the monkey leaders as follows. प्रति उवाच ततः सर्वान् इदं वानरयूथपान् सर्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनाम्। मैं तुम सभी वेगशाली वानरों पर यों ही बहुत संतुष्ट हूँ। धर्म निष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। I am highly pleased with you all, the monkeys, which are all very heroic. चरन्त्या मम धर्मेण न कार्यमिह केनचित् एवं मुक्तः शुभं वाक्यं तपस्या धर्म संहितम्। उस तपस्वी ने जब इस प्रकार धर्म युक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यो कहा। उवाच हनुमान वाक्यं ताम् अनिन्दित लोचनां शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः सर्वे वै धर्मचारिणीम्। यः कृतः समयो अस्मासु सुग्रीवेन महात्मना स तु कालो व्यतिक्रांतो बिले च परिवर्तताम्। देवी, तुम धर्मचारण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। Passing as I am my time with righteousness, no object of mine will be served by anyone here. Spoken to in these noble words, conformable to righteousness by the hermitess, Hanuman replied as follows to that lady of irreproachable eyes. We have all really come for protection to you who are engaged in practicing virtue. The time limit which was fixed for us by the high-souled Sugriva clearly expired even while we were actually roaming about in the cave. सा त्वम् अस्मात् बिलात् अस्मान् उत्तरयितुम् अर्हसि तस्मात् सुग्रीववचनात् अतिक्रान्तान् गतायुषः। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सब के सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो। Situated as you are, you ought therefore to help out of this cave us who have violated the command of Sugriva and as such are doomed.
त्रातुमर्हसि नः सर्वान् सुग्रीव भय शङ्कितान् महच्च कार्यम् अस्माभिः कर्तव्यं धर्मचारिणी। धर्मचारिणी, हमें जो महान कार्य करना है उसे भी हम इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके। त्वच्छापि न कृतं कार्यम् अस्माभिः इह वासिभिः। एवं मुक्ता हनुमता तापसी वाक्यम् अब्रवीत्। जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुं तपसः सुप्रभावेन नियमोपार्जितेन च। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी बोली, मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला जाता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। You ought to deliver us all, stricken as we are with fear of Sugriva. Nay, a great task has to be accomplished by us, O lady, engaged in practicing virtue. While spending our time here, even that work could not be executed by us. Requested thus by Hanuman, the ascetic woman replied as follows. I consider it difficult for anyone once entered into this cave to return alive. I shall, however, enable the monkeys, one and all, to emerge from this cave by the superior power of my asceticism, duly acquired through restraint of the mind. सर्वान् एव बिलात् अस्मात् तारयिष्यामि वानरान् निमीलयथ चक्षुंषि सर्वे वानरपुङ्गवाः। श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। शीघ्र आंख बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। Pray, all close your eyes, O bulls among monkeys, for it will not be possible for those whose eyes remain unclosed to get out of the cave. नहि निष्क्रमितुं शक्यम् अनिमीलितलोचनैः ततो निमीलिताः सर्वे सुकुमाराङ्गुलैः करैः। ये सुनकर सबने सुकुमार अंगुली वाले हाथों से आंखें मूंद ली। गुफा से बाहर निकलने की इच्छा से प्रसन्न होकर उन सब ने सहसा नेत्र बंद कर लिए। Having closed their eyes, all the monkeys then joyously covered them all at once with their hands, possessed of soft fingers with the desire of going out of the cave. सहसा पिदधुः दृष्टिं हृष्टा गमनकाङ्क्षया वानराः तु महात्मानो हस्तरुद्धमुखाः तदा। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा वानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते मारते बिल से बाहर निकाल दिया। Their faces still remaining covered with their hands, the high-souled monkeys were for their part transported by her out of the cave in the twinkling of an eye at that juncture. निमेषान्तरमात्रेण बिलात् उत्थारिताः तया उवाच सर्वाः ताः तत्र तापसी धर्मचारिणी। तत्पश्चात वहां उस धर्मपरायण तापसी ने उस विषम गुफा से बाहर निकले हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा। Asking them all to take courage when they had come out of danger, the ascetic woman who was engaged in practicing virtue spoke to them as follows on that occasion outside the cave. निश्रुतान् विषमात् तस्मात् समाश्वास्येदम् अब्रवीत् एष विन्ध्यो गिरिः श्रीमान् नानाद्रुमलतायुतः एष प्रस्रवणः शैलः सागरो अयं महोदधिः स्वस्ति वो अस्तु गमिष्यामि भवनं वानरषभाः इत्युक्त्वा तद्बिलं श्रीमत् प्रविवेश स्वयंप्रभा। श्रेष्ठ वानरों, ये रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विंध्यागिरी, इधर ये प्रस्थवनगिरी है और सामने ये महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। Asking them all to take courage when they had come out of danger, the ascetic woman who was engaged in practicing virtue spoke to them as follows on that occasion outside the cave.
On this side stands the glorious Vindhya range covered with trees and climbers of every species, and there rises the Prashavarna mountain, while in the opposite direction stretches the Indian Ocean. May good fortune attend on you. I shall now return to my abode, O jewel amongst the monkeys. Saying so, Swayamprabha penetrated deep into the aforesaid splendid cave. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 250 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 52 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपताम पहर्तारम दातारम सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।